Hey guys, welcome back to MUSC Red Devils NCR, and this is another episode of FPL brew that we have got for you. तो यूनाइटेड की तो यार फिलहाल कोई खास न्यूज़ है नहीं, बस लड़के थाईलैंड पहुंच चुके हैं और अब देखना है प्री सीजन में क्या होता है। और साइनिंग्स वगैरह भी अभी फिलहाल तो हो नहीं रही, तो हमने सोचा कि एफपीएल की बात कर लें, जिसकी बातें कभी खत्म होती नहीं है। So Yes. today I am joined by Amit Bhai as always, and we are going to be talking about the defense, जिसमें कि goalkeepers की भी बात करेंगे और defense की भी बात करेंगे। और screen हमने share कर दिया है आपकी convenience के लिए। So let's start. But before starting, don't forget to like the videos. Don't forget to subscribe the video because यार आजकल YouTube का ना algorithm ही ऐसा हो गया है कि जब तक 100-200 लोग लाइक सब्सक्राइब ना करें तब तक वो शेयर नहीं होती, मतलब अपने आप पॉपअप ही नहीं होती Yes. दूसरों के सजेशंस में। So let's begin. So Amit bhai, how are you feeling about the options in defense and goalkeeper this season in FPL? Yeah. So options again, in defense, almost the prices are same as of last year. Though there are few increases like the likes for the Cancelo, Reece James, they all have increased. But yes, for Alexander Arnold, who was the top most scoring defender last season, along with Cancelo, so his price remains same, which was a shock because I was thinking he will be around 8 million, but no, they have kept the price same. Goalkeepers, there are only three goalkeepers who is of 5.5, others are of 5 and 4.5. So that was not expected. And even Loris is at 5.5, so that was not at all expected because Mendy, who came third, and his price is 5. But yes, there are options. Few have prices have been decreased, so that can be good for the differentials at 4.5 million defenders. Yeah, so let's begin with the goalkeepers first, I guess. हाँ, तो गोलकीपर्स के बारे में बात करते हैं। वो हमने पहले वीडियो में भी बात की थी, बट Yes. अभी एक्चुअली क्या है ना कि जो इस सीजन का टेम्पलेट है वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है। सो आई थिंक कि मतलब ज्यादा से ज्यादा टीम्स आप देखोगे जिसमें मतलब 3 डिफेंडर, तो आई डोंट थिंक कोई ऐसा होगा जो 3 डिफेंडर के साथ जाएगा फर्स्ट गेम वीक में। वो या Minimum तो 4. हाँ, मिनिमम 4, और वो 4 भी प्रीमियम होंगे सारे के सारे। Yes. और किसी में अगर ज्यादा जोश होगा तो वो 5 प्रीमियम्स के साथ भी जा सकता है। तो इसलिए मतलब गोलकीपर का जो ऑप्शन है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें, इस सेंस में कि मतलब अगर आप प्रीमियम गोलकीपर देखें तो एडरसन, एलिसन, मेंडी हो गए आपके। और इसमें आपको चूज Hmm. करना पड़े कि अगर आपके पास 2 लिवरपूल डिफेंस है तो फिर आप नहीं जा सकते एलिसन के साथ, क्योंकि साला है आपकी टीम में ऑलरेडी। अगर आपके पास सिटी के हालैंड हैं और कैंसेलो हैं और शायद फोर्डन है तो आप नहीं जा सकते एडरसन के साथ। तो इन इन कॉम्बिनेशंस को देखते हुए आई थिंक, मेरे हिसाब से तो इन माय हम्बल ओपिनियन, बेस्ट पिक वुड बी मेंडी ऑफ चेल्सी। मेरे हिसाब से तो वो बेस्ट पिक होना चाहिए। इसको एक बार इसकी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। एंड सो ही इज प्राइस्ड एट 5 मिलियन, एंड ओनरशिप भी इसलिए इसकी काफी ज्यादा हाई है एट ऑलमोस्ट 25%। एंड पिछले साल बहुत ही अच्छा सीजन रहा था मेंडी का। एंड आई थिंक दैट एज एन ओवरऑल गोलकीपर इज अ वेरी नाइस पिक। मतलब आगे आके वो Yes. बॉल कलेक्ट भी कर लेता है एंड ही इज नॉट अफ्रेड टू चार्ज टुवर्ड्स द बॉल, एंड काफी कमांडिंग है डिफेंस से हमेशा कांस्टेंट कम्युनिकेशन में रहता है। and he is also he also gets a lot of bonus points with his saves. So that too playing for a premium team like Chelsea, and Tuchel is a very defensive manager. So I think Mendy is a good pick. I also think कि मतलब ठीक है, कुछ लोग बोल रहे थे कि अब चेल्सी के चलो रूडिगर चले गए हैं और क्रिस्टियनसन चले गए हैं, सो क्या होगा अब सेंटर बैक की सिचुएशन का क्या होगा। बट आई थिंक थियागो सिल्वा इज देयर। आई थिंक इज अ वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर, और लास्ट सीजन चालोबा का काफी ब्रेकआउट सीजन था। उसके अलावा एस्पिलिक्वेटा कैन आल्सो प्ले एट सेंटर बैक इवन दो इज लिंक्ड विद बार्सिलोना। एंड नेथन आके, अभी रिसेंटली न्यूज आई है कि फॉर 40 or 50 million pounds they are planning to sign Nathan Ake. So plus they also have very good defensive midfielders in Jorginho and Kante. Yeah. So I think that he's a very good pick. What are your thoughts on this? Yes, he's a very good goalkeeper, no doubt about that. And also his points are less compared to Edison and Allison last season because their defense was also their fullbacks, two main fullbacks, Reece James and Chilwell, who were out for most of the season. Right. Chilwell was almost out for full season, and Reece James also was available at start. Then he was out in mid, and for last few games he was back. So that was a main difference because
they had to go for Chalobah that though he performed well, even Alonso, who has to play almost every game at left back, so he was also very good. But now their defense back, and they are also signing new centre backs because all their defense, Christensen and everyone is going to some other clubs, Rudiger. So now I guess it's a huge chance for Mendy to regain his points, what he lost last season. Mm. And I'm not surprised his ownership is at 25%, and also his price range is less than the Allison and Edison. So Yeah. that's also makes him a difference because Yes. Yes. most of the last season also I went for Ramsdale when he was at 4.5, Mm. and but Arsenal defense I couldn't trust much because somehow they leaked the goals and he never got that clean sheet point, though he was giving me the bonus point. But Mm. Mendy, he was placed at 5.5 last season, and this season he's 5. So he will definitely be in most of the teams. And I guess you have made the points exactly correctly because Mendy is a great goalkeeper in Premier League for last 2 seasons now. Also, one more point that I would like to add over here before we quickly move on is the fact that I don't think that there is any value in the Chelsea forward line or in the midfield. So Yeah. there is no scenario in which you will be having either somebody like Mount or even Havertz or even Sterling maybe, because there are better value options in all those categories. So I think the most you can do is have both Ben Chilwell and Reece James in your team. But then again, it leaves you with a third spot, which is Edward Mendy. And tripling up on Chelsea defense is not such a bad idea No. because Tuchel is a Yeah. very defensive manager. So Yes. that's all about Mendy for now. But let's talk about the other premiums. So Allison के बारे में यार देखो, मेरा personal opinion ये है कि I don't think anybody will be going for him because most of the drafts that I've seen on Twitter and on other content creators on YouTube and all, so all of them have gone for either Alexander Arnold, Luis Diaz, and Salah as their three Liverpool premium picks, or they have gone for Alexander Arnold, Robertson, and Salah. So Salah. Yeah. these are the most popular picks. Then there are also some people who have mixed and matched, and they've gone for Darwin Nunez or they've gone for Roberto Firmino. तो Yes. ये सब चलता रहेगा, लेकिन आई थिंक कि मतलब इन इसमें से कोई भी सिनारियो नहीं है जिसमें से कि आप एलिसन को पिक कर सको. आई डोंट नो व्हाई हिज ओनरशिप इज अराउंड दिस 18.6. आई डोंट नो This व्हाट. is, I'll tell you, this is why, because when you are selecting the auto pick team, so he comes automatically onto your team, and most of the managers have not made their teams as of now because they were only checking their FPL IDs. So that's why his ownership, and you are absolutely correct, his ownership will definitely come down to below 10%. Yes. Because if someone wants to have Allison in his team, then they will only have Salah or Alexander Arnold in their team. Yes. But Salah at 13, 7.5 for Arnold and 5.5, and I don't think 33 million will be spent on three players, that to Liverpool. Definitely not. If they are not going for Salah, they are going for Diaz or they are going for Robertson, then they can bring back Ellison to their team. But his ownership will definitely at the start of the season will be come down to, I guess, 7-8%. That's right. This And is also, what I think. like, I feel that if you, okay, first let me check one thing. Yes, you're absolutely right. I also auto picked this team of my second account. So Allison is right there. So I think that, if you even go for Allison, it's not such a good pick because, okay, you'll get clean sheet points because Liverpool is a good defense. That's fine. Yeah. But you're not going to get bonus points with Allison. Yes. Because Yes. teams can't reach their goalkeeper at times, especially the bottom teams. In the top six, yes, definitely he will definitely be having his name in contention for the save of the season and stuff like that. But that will again be for a very limited amount of games. So that's I think Allison you should avoid. प्राइस पॉइंट भी है और ये सब मतलब जो हमने अभी रीजंस दिए उसकी वजह से. नेक्स्ट लॉरीज की बात करते हैं. लॉरीज में यार आई थिंक कि अगेन इट्स द सेम केस एज एलिसन. अगर आप स्पर्स के लिए जा रहे हो तो देयर आर वे बेटर ऑप्शंस एज हैरी केन, देयर इज ह्यूमनसन, एज कुलुसेव्स्की, रिचार्लिसन आ गया है Perisic. तो Now पेरिसिच. Perisic is हाँ, there, पेरिसिच तो and मतलब even their defense performed well, likes of Davis, Doherty, yes, yes, Sessegnon even at the end of season, and they are all 4.5 million picks, definitely. 4.55 million picks. And I'm surprised FPL has priced Loris at 5.5 because I thought he will be at 5 only.
But me too. I don't know why he was priced 5.5 just because he scored that uh, clean sheets, and he saved, I guess, couple of penalties last season, so that's why he also got that bonus point. So that's why his price is increased. But I again, as of now, only his price ownership is 4.5%, and definitely go down at the start of the season. Yes, yes. So again, Hugo Lloris is somebody I would ask you all to avoid. And yes, you brought Perisic into the conversation, so we will be talking about him when we come to the defense. And next, let's talk about Ederson. Ederson is one player that appeals to me a lot because I'm Mhm. seriously thinking about going for him as my goalkeeper, as my premium goalkeeper, and then having a 4 million option alongside him because of two reasons. The first is that Haaland is there. Then one City defender will be there, either Cancelo or Laporte in my team, and then there will be Edison. Because in Yes, midfield you can't predict in Manchester City. पेप रूले से कोई बच नहीं पाया है, सब मर जाएंगे बस पर and रूले he बच is the जाएगा. one who is safe. हम्म. Who is the one who is safe Yes. from that Pep rule? हाँ So तो yes, and Ederson is a good shout. yes, yes. Edison, and his ownership will definitely be, as of now it's 13.1%, but it can 13.1. definitely go up. हाँ ये आई थिंक ये वन ऑफ द हाईएस्ट जाएगा. 20 से ऊपर तो Yeah. 100% जाने वाला है. एंड आई थिंक एडरसन इज अ वेरी गुड शाउट इफ यू वांट सेफ्टी, इफ यू वांट क्लीन शीट्स चाहिए आपको, और वो थर्ड सिटी का स्पॉट भी अगर सिक्योर रखना है, जो कि मतलब रोटेशन प्रूफ है, उसमें आप रोटेशन का कुछ आपको रिस्क है नहीं, तो देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर एडिसन. एंड लास्ट सीजन आई रिमेंबर, उससे भी पहले वाले सीजन 6 मिलियन 6.5 मिलियन तक गया था एडरसन का प्राइस. सो ये तो बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट बन जाता है अगर पैसे बच रहे हैं. विथ हिम देन यू कैन पेयर अप अ 4 मिलियन डिफेंडर, सॉरी 4 मिलियन Yeah. बैकअप गोलकीपर. And also he's fit. He doesn't have that injury record and everything, so Yeah. he will definitely play around 35. Depends upon City how if they win the season early or if they're not winning. Yes. So he will definitely play 35 around 35 games. He will हाँ start for मतलब that 35. सेफ पिक है, अच्छा पिक है, आई लाइक द पिक. Yes, yes. सो ये तो हो गई प्रीमियम्स की बात, और प्रीमियम से हमने शुरू इसलिए किया था. अच्छा, एक दो प्रीमियम रह गए हैं, एक रैम्सडेल है, एक डहेया है. तो आई थिंक दैट रैम्सडेल, देखो आई एम गोइंग टू से दिस आउटराइटली टू एवरीबॉडी लिसनिंग, डोंट गो फॉर रैम्सडेल. ठीक है, क्योंकि आर्सेनल का प्री सीजन देख कर आओ एक बार पहले. वो लोग थर्ड टियर टीम से पता नहीं कितने कितने गोल खा रहे हैं. मेरे टीम में तो वो भी था, जो मेन टीम है मेरी, उसमें मेरी टोमियासु भी था, वो मैंने हटा दिया ये दोनों मैचेस देखने के बाद आर्सेनल के प्री सीजन के. मैंने कहा नहीं, ये नहीं हो पाएगा मुझसे. तो आई डोंट थिंक रामसडेल इज अ गुड शाउट दिस सीजन. प्लस उसका प्राइस पॉइंट भी 5 मिलियन आ गया है, तो इट्स नो यूज. एंड द लास्ट प्रीमियम इज आवर वेरी ओन डेव, बिग David De डेव, Gea. बिग डेव. Uh, एंड हाँ, बोलो बोलो. his contribution or his points ratio will depend upon our defense. Our defense was in shambles last season, so he couldn't get that clean sheet point because he makes a lot of saves. So that points are definitely secured. But yes, if United start getting that clean sheets, around 15 to 20 clean sheets if they are getting this season, then his ownership can definitely increase in the coming weeks because there are 3 wild cards to use. And if United shows some improvement in the defense in coming weeks or the start of the season, because I don't think anyone will go for him at the start unless you are a diehard United fan or you don't just go by the emotions, not playing FPL by the team, but you go by the emotions. But yes, his ownership will definitely be increasing if United plays well at the start of the season and if they are keeping the clean sheets. Yes, that is true, but I mean, I think that 5 million is too high. I think either you go for 5.5 if you're going for expensive, or you go for 4.5 and just save that money. So that is there. Plus, I think if you are at all to go for a 5 million option, you go for De Gea instead of Ramsdale, because De Gea has that save points potential. Yes. And we all know De Gea can save the Titanic also. So there is no debate over here. And alongside De Gea and Ramsdale, there is Schmeichel also, a good option, and Jose Sa is also Jose there. Sa is there, yeah. Good option, good options all around. But again, I would stick to my point. I would say if you want to go for an expensive goalkeeper, go for 5.5 million Edison. Or if you want to go 5 million, your first priority should be Mendy. If you have some hate against Chelsea, then you can consider these other options. Yeah.
And in that order, I think my first would be Jose Sa, then would be De Gea, then would be Schmeichel, and then would be Ramsdale on current form of preseason, that is. So I think we're done with goalkeepers, and now let's move on to defenders. What do you say? Yes. So defenders, I think पहले तो आप बताओ आपका, मैं आपको 100 मिलियन दिया सिर्फ डिफेंडर्स के लिए, आपका 5 क्या होगा, बैक 5? Arnold, हम्म Cancelo, हम्म James, हम्म Chilwell, हम्म Robertson. So these 5 premium picks will definitely be in हाँ my team if I'm getting the unlimited budget what you are talking about for defenders. हम्म Now I have reasons. So we have all seen what Arnold and so Cancelo was also one of the persons who was free from that Pep roulette thing. So he yes was not considered for that. yes So he will definitely be starting all the games for them. Then our Trent Alexander, he can score free kicks, he can give you crosses, he can give you assists, he can score goals also. Even Robertson from the left hand side for the pool, and Reece James and Chilwell also does the same thing what they were doing, what Arnold and Robertson does for Liverpool. So I guess these 5 are the if anyone is going for the premium defender, so these 5 are the premium defenders who everyone can think of keeping in their team. So this is my top 5. So now you tell. डेफिनेटली सही बात है आपकी। देखो मेरा तो थोड़ा ना, मतलब मैं थोड़ा सेफ खेलता हूँ, हमेशा से मेरा ये रहा है कि मैं मतलब टेम्पलेट के साथ जाता हूँ, इतना अग्रेसिव होता नहीं। बट इस बार क्या है कि जैसे हर सीजन में क्या होता है कि इट्स अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट, बट इस बार इट्स अ स्प्रिंट, इट्स नॉट अ मैराथन। तो आपके पास इफेक्टिवली मतलब अगर देखा जाए तो 4 मिनी एफपीएल के सीजन हैं एक ही सीजन के अंदर। Yes. मैं आपको, Yes. आप 4 बार अपनी टीम बना सकते हो। एक बार आप अभी बनाओगे, फिर एक बार आप गेम वीक 8 First wild 9 card. वो वाइल्ड कार्ड खेलोगे, उसके बाद 16 17 के बीच में अनलिमिटेड ट्रांसफर्स हैं, फिर उसके बाद एक और वाइल्ड कार्ड बचा रहेगा, उसमें फिर आपका फ्री हिट भी आ जाता है बेंच को। तो इस साल बहुत मतलब ऑप्शंस बहुत है, तो इस साल अग्रेसिव होने का ही सीजन है। इस साल आप पीछे हट के नहीं रह सकते कि नहीं जी हम तो सेफ खेलेंगे। तो इस साल आई थिंक बेंच पे ना इतना वो फोकस करने का आई डोंट थिंक पर्सनली इतना जरूरत है। तो बेंच पे आप होगा भी नहीं. हाँ होगा भी नहीं। मिडफील्ड में अगर आप दो 4.5 के ऑप्शन रखो और फॉरवर्ड लाइन में सैम ग्रीनवुड को रख लो 4.5 का, और एक 4 मिलियन का गोलकीपर, तो आपकी बहुत ही लिमिटेड बजट वाली वो बन जाएगी, बेंच बन जाएगी। और फिर आप अपने डिफेंडर्स में बहुत सारा पैसा डाल सकते हो, जो कि डालना Yeah. भी चाहिए। तो पर्सनली आई थिंक कि अलेक्जेंडर आर्नल्ड तो कहीं नहीं जा रहा है, वो तो मतलब नेल्ड ऑन है, पिक होना ही होना है। कैंसेलो का मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि इस साल यूसीएल का जो कैंपेन है वो उसके जो फर्स्ट लेग वाले जितने भी नॉकआउट स्टेज के जितने भी मैचेस हैं वो सब खत्म हो जाएंगे वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही। एंड दिस इज नेवर हैपेंड बिफोर। मतलब Yes. सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन में इंजरीज होती ही इसलिए थी बिकॉज इतने सारे कॉम्पिटिशन्स पे कम्पीट करना हाँ. होता है। और इस साल आपको कप के भी एक दो फिक्चर्स खेलने हैं, आपको यूसीएल यूईएल भी खेलना है, कॉन्फ्रेंस लीग का भी आई थिंक सेम होने वाला है। एंड उसके साथ साथ प्रीमियर लीग तो वैसे ही इतना हेक्टिक है, 16 गेम वीक्स निपटाने हैं इनको वर्ल्ड कप से पहले पहले, World Cup जिसमें पहले. जिसमें कि एक इंटरनेशनल ब्रेक भी आएगा। तो हाँ. गेम इंजरीज वीक होने, 8 हाँ के बाद. इंजरीज होने का तो बहुत चांस है। एंड इसीलिए आई थिंक पेप थोड़ा पैरानॉइड हो जाएगा। पेप अपने आउटफील्ड में थोड़ी रोटेशंस कर सकता है, इसलिए बस कैंसेलो का मुझे थोड़ा सा लग रहा था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक अलेक्जेंडर आर्नल्ड रॉबर्टसन तो मेरी टीम में नेल्ड ऑन है, वो कहीं नहीं जा रहे, दोनों के दोनों नेल्ड ऑन है। एंड रॉबर्टसन को डियाज के मतलब दोनों के बीच में मैंने कंपैरिजन किया तो पता चला कि रॉबर्टसन का पॉइंट्स पर गेम बहुत ज्यादा हाई है कंपेयर टू डियाज। एंड प्लस इज अ डिफेंडर ऑल्सो, तो अगर गोल वोल मारता है तो वैसे ही एक पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा उसको, बोनस पॉइंट्स पे ज्यादा फर्क भी पड़ेगा। उसके अलावा आई थिंक जेम्स तो रहेगा ही टीम में। एंड उसके बाद फिर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, बिकॉज आई हैव ट्राइड टू गो फॉर टीम्स जो कि यूरोप में कैंपेन नहीं खेल रही हैं इस सीजन, बिकॉज दोज आर द टीम्स जिनके प्लेयर्स सबसे ज्यादा सेफ रहेंगे। सो यू नो लाइक, पर टॉप 6 तो सारे ही खेल रहे हैं इस बार, जो बिग 6 है. हाँ बिग सिक्स सारे खेल रहे हैं इस बार। सो आई हैव ट्राइड टू यू नो पिक आउट सर्टेन प्लेयर्स जो कि मतलब थोड़ा वैल्यू फॉर मनी भी प्रोवाइड करें, जैसे कि आपका ट्रिपियर हो गया, कैश हो गया, डीन हो गया, यू नो प्लेयर्स लाइक दैट। एंड स्पेसिफिकली एक टीम है जिसको मैं बहुत ज्यादा टारगेट कर रहा हूँ डिफेंस, अटैक और मिडफील्ड तीनों में, एंड दैट टीम इज लेस्टर सिटी।
आई थिंक जो लास्ट सीजन आर्सेनल का हाल था कि वो नहीं खेल रहे थे यूरोप, तो इसलिए थोड़ा फॉर्म पकड़ पाए थे. आई थिंक लेस्टर सिटी दिस सीजन विल बी डेंजरस इन द प्रीमियर बट लीग. आई एग्री टू पॉइंट, बट उसमें एक मुझे बस एक डर है कि साइनिंग्स उनकी किस हिसाब से होती हैं, बिकॉज टीलमेंस के जाने की बातें हो रही हैं कि टीलमेंस विल लीव लेस्टर. वार्डी ईयर ओल्डर, सो अगेन लास्ट सीजन वो काफी इंजर्ड था. सो अगेन देयर वाज वो स्ट्राइकर का इशू था जो डाका उन्होंने लिया था, लेकिन वो इतना परफॉर्म कर नहीं पाया था. फिर मेडिसन भी आउट ऑफ फॉर्म था बीच में. लास्ट सीजन उसको एंड ऑफ सीजन उसे लास्ट 10-15 गेम में फॉर्म पकड़ा था. बस वही डर है कि किस हिसाब से वो साइनिंग्स कर पाते हैं. दो लेस्टर इज वेरी गुड एट साइनिंग द प्लेयर्स, उनकी स्काउट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो किस हिसाब से डेफिनेटली टीम में फिट बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे, बिकॉज अगेन दे विल बी डिपेंडेंट अपॉन बार्न्स, Madison and Vardy at top. Yes. So these three are the main forward line what Leicester will be targeting, or they want that these three needs to be on top form and also needs to be fit enough. But again वही इशू हो जाता है. वार्डी 1 साल और ओल्ड हो गया है. मेडिसन का भी इशू रहता है बीच बीच में फॉर्म का, और बार्न्स तो स्टार्टिंग में आउट ऑफ फॉर्म था ही. So उनका प्री सीजन को ट्रैक करना या उनका प्री सीजन की जो फॉर्म होगी वो डेफिनेटली हाँ देखने लायक होगी. एंड इफ समवन इज गोइंग फॉर दैट लेस्टर पिक्स, सो दे डेफिनेटली नीड टू कीप अ क्लोज वॉच ऑन देयर प्लेयर्स इन द प्री सीजन, बिकॉज उनका प्री सीजन में बार्न्स आउट ऑफ फॉर्म था लास्ट सीजन, मेडिसन आउट ऑफ फॉर्म था, वार्डी था, लेकिन वार्डी फिर इंजर्ड हो गया था सीजन के स्टार्टिंग के बाद. तो वो इशू है. और अगर वो टील्समैन जो उनकी टीम में उस टाइम गोल्स मार रहा था स्टार्टिंग में, और अगर वो भी चले जाएगा तो कैसे. और मेंडी तो इंजर्ड था ही उनका, एनडीडी एंड मेंडी आई गेस दोनों इंजर्ड थे, तो जो उनके सीडीएम्स थे. सो वही बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है उनकी फिटनेस के ऊपर टीम. बट यस, अगर इफ ऑल द बॉक्सेस आर टिक्ड then they can be a dangerous team again. And again वो Big Six को एक खतरा रहेगा कि हाँ Leicester can be a team who can beat all of them at their home for sure. Definitely, if all fit. सही बात है. अच्छा, और लास्टली मुझे बस एक चीज ये ऐड करनी है कि एक और प्लेयर है जो कि है, ये कुछ आ गया, सॉरी, आई अपोलोजाइज फॉर दैट. कुकुरेला के बारे में मैं बोलने वाला था कि कुकुरेला बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पिक बन जाता है, बिकॉज 5 मिलियन का प्लेयर जिसको सिटी साइन करने वाली है, और अगर कर लेती है साइन तो इससे ज्यादा पिक्ड प्लेयर कोई होगा नहीं. पेरिसिच को भूल जाएंगे. लेफ्ट बैक, सिटी का लेफ्ट बैक शॉर्ट हो जाएगा, जो जिनचेंको और कैंसेलो के साथ उनका चलता रहता था. he will be definitely be starting that left back position. So I guess yes, you have made the correct point. इसकी अगर सिटी साइंस हिम, his ownership will definitely be increased multiple folds. एंड आई थिंक अभी ले लेना बेटर है इसको, क्योंकि ये मतलब एक बार सिटी के शर्ट में ये खेलना शुरू हो गया तो इसका प्राइस सिर्फ ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, और फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा लेना. तो आई थिंक मेरा टॉप 5 कुछ इस तरह से ही रहेगा कि ट्रेंट होगा, रॉबर्टसन होगा, जेम्स होगा, एंड कैंसेलो की जगह लपोर्ट को मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा, बिकॉज वो थोड़ा मतलब ठीक था लास्ट सीजन, उसका फॉर्म मुझे बेटर लगा. हाँ नहीं, वो पहले इंजर्ड भी था बीच में स्टार्टिंग में, फिर लास्ट सीजन उसका मिड सीजन के बाद से ही वाज इन टॉप फॉर्म. हाँ, एंड मेन रीजन भी ये है कि मतलब अगर मतलब बेंच हो भी गया तो 6 मिलियन का प्लेयर बेंच हो, वो ज्यादा अच्छा लगता है रादर देन कि 7 मिलियन का प्लेयर बेंच हो जाए. और फिर लास्ट पिक आई थिंक अभी के हिसाब से तो आई थिंक पेरिसिच को ही जाऊंगा मैं. पेरिसिच की मतलब क्रेजी, मतलब बहुत क्रेजी ओनरशिप है इसकी, एंड देयर 46% ओनरशिप 5.5 मिलियन के प्राइस पे. लोगों को पता नहीं है कि ये स्टार्ट करेगा नहीं करेगा, बस हाँ. बट लेकिन लोगों ने जो इंटर मिलान में देखा है उसको लास्ट में, तो उसके हिसाब से और उनको लग रहा है कॉन्टे टाइप प्लेयर है. बिकॉज आई अगेन he is a good player and he can be a great signing, but again he will not start every game. He will not because start. Conte has to play UCL also, and he will definitely be rotating between Sessegnon and even Davis is there, Ben Davis, who can play as left back, and Perisic. So these three he will be rotating, and even he can start at the start of the season, but in between season जब इनकी cups games and वो UCL आएगा, so he will definitely be rotating. आई थिंक स्पर्स का बेटर एसेट आई थिंक डॉकर्टी हो सकता है, उसको मैं अभी देख रहा हूँ.
अभी मैं And कंसिडर he's कर रहा 5 हूँ. million. हाँ, His 5. price has been 5 million. हाँ, So आधा he मिलियन can आप be a सेव great भी pick. कर सकते हो. एग्जैक्टली, आधा मिलियन सेव भी कर सकते हो. लेकिन अभी एक किसी को साइन भी किया है स्पर्स ने, जो राइट विंग बैक शायद खेल सकता है, मैं नाम भूल रहा हूँ. किसी को तो किया है साइन. आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बट आई थिंक देयर इज समवन. एंड एमरसन रॉयल का मतलब आई डोंट नो व्हाट द सीन इज ओवर देयर. अभी तक तो उसको बोला है कि he can leave the club. No, sorry, he cannot leave the. अभी तक उसका नाम नहीं है जो लीव क्लब में, लेकिन वो ये वो डोहर्टी से आगे स्टार्ट नहीं करेगा. बट यस, वो कप गेम्स में जो होगा उसमें रॉयल वगैरह खेलेगा, तो डोहर्टी कैन गेट दैट full, I would say, rest and everything. So he can be a great asset. And even Tanganga is there, who has been playing for Spurs for last 2-3 seasons now. बट उसके बीच में अगर उसमें फॉर्म उसकी सही रही, बिकॉज ही इज अ गुड प्लेयर, अगर, और वो भी आई गेस 4.5 मिलियन का. नहीं, वो 4 बट मिलियन का है. ओ, उसके प्राइस और कम हो गया. ओके, 4 सो मिलियन. बट यस, डोहाटी अगेन कैन बी अ ग्रेट पिक लाइक लास्ट सीजन. सो इसके एंड ऑफ सीजन जब कॉन्टे आया था, उसके बाद डोहाटी जो उसके साथ कॉन्टे की टीम में खेला है, एंड विद फुल प्री सीजन नाउ फॉर कॉन्टे विद डोहाटी, आई गेट उसके साथ वो काफी जेल करेगा, और ऑगस्ट डोहाटी को वो स्टार्ट करेगा ही करेगा. डेफिनेटली, सही बात है. तो आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग. जहाँ तक कि बजट डिफेंडर्स की बात आती है, तो आई थिंक हमने लास्ट वीडियो में थोड़ा बहुत टच किया था. अगर इफ यू वांट अ सेपरेट वीडियो स्पेसिफिकली ऑन बजट डिफेंडर्स, तो आई मीन देयर इज नॉट मच टू कवर. आई थिंक द टू आर्सेनल गाइज, वाइट एंड टोमियासु एट 4.5, आई थिंक वो बेस्ट रहेंगे. उसके अलावा 2-3 पिक्स और है. अगर मतलब सेपरेट वीडियो चाहिए तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन बजट डिफेंडर्स, बजट गोलकीपर्स, बजट मिडफील्डर्स, बजट फॉरवर्ड्स. इन सब पे सेपरेट भी बना सकते हैं. बाकी जो हमको सही लगा वो हमने मेंशन किया. एंड एनीथिंग टू ऐड, अमित भाई? No, nothing. I guess you has covered it all. Yes, so this is great, and we will be joining you one more time during the midweek with our midfielders ka video. So stay tuned for that. And it was a good session with you, Amit bhai, and we would like to Same have here. you. We would like to have you back in the midweek. Sure, definitely. Chalo, so happy FPLing to everyone. Yeah, yeah. Okay. Okay, bye bye.